Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you're all doing great. So today we will discuss verb thoroughly. So what is verb? A verb is a word which denotes the action of a noun or asserts something about the noun or reveals event pertaining to the noun. So as we learned before कि verb क्या होता है, किसी भी noun का action, ठीक है, किसी भी noun का work जो है, implementation जो है वो basically verb कहलाती है. For example, the student reads, the dog barks. Okay, so the underlined words denotes the action of a noun in each sentence. ओके सो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं बेसिकली ये क्या है, वर्ब है, ये एक्शन ऑफ अ नाउन है. सो इन सेंटेंस में देखें, स्टूडेंट इज अ नाउन एंड रीड्स इज अ वर्ब. ओके सो डॉग इज अ नाउन एंड बार्क्स इज अ verb. Okay, so third one, the student is brilliant, the dog is a pet animal. Okay, so the underlined words in each sentence reveal something about the verb. Okay, fifth one, the student is appreciated, the dog is driven away. So इस sentence में देखें is जो है ये क्या है, verb है, ठीक है, जो reveal कर रहा है something, ठीक है, जो कि actions को reveals कर रहा है in sentences में. Okay, in these sentences the verb reveals what is done to the noun, कि एक noun जो है उसने क्या काम done किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है. like he drives a car, he is driving a car. in the first sentence देखें जो drives है ये verb है और सेकेंड सेंटेंस में जो इज है ये एक्ट कर रहा है एज अ एडिशनल वर्ब. ठीक है, और क्या when a verb is added with one or more verb that is known as a compound verb. जब हम एडिशनल वर्ब को यूज़ करते हैं तो उसको हम एज अ कंपाउंड वर्ब के तौर पर लेते हैं. ओके, सो द अंडरलाइन वर्ब इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नोन एज कंपाउंड वर्ब. फॉर एग्जांपल, मेनी हाउसेस एंड हर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सुनामी. सो वर डिस्ट्रॉयड ओवर हियर इज अ वर्ब. ओके, सो आई विल कॉल यू टुमारो, विल कॉल जो है ये वर्ब है. आई एम लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सो आई एम लुकिंग इज अ वर्ब एज वेल. सो आगे है auxiliary verbs. क्या होती हैं? is a verb which is added to other verb in order to express different tenses, negative meanings, questions, and also to reveal the passive form of a sentence. So auxiliary verbs are of two kinds, primary auxiliary and modal auxiliary. So primary कौन सी होती हैं? These auxiliary verbs are used to reveal question, negatives and tenses. ठीक है, जो primary होते हैं ये शो करते हैं question based negative tenses. ठीक है, so for example, have I not helped you? क्वेश्चन मार्क. सो दीज और ठीक है, सो ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं इनको हम ठीक है एक तो इंटरोगेटिव कहते हैं, बट यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी है सो ये यहाँ पर नेगेटिव बेस्ड भी आ रहा है लेकिन नॉट यूज हुआ है सेंटेंस में. सो बी, आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद दिस केस. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस. आई हैव ऑब्टेन्ड सेंट पर्सन इन द फाइनल एग्जामिनेशंस. ओके, सो इस तरह के जो क्वेश्चन बेस्ड नेगेटिव टेंसेस होते हैं इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं. सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स विच are used to express the different attitudes of the mind are called modal auxiliary verbs. So जो जिसमें different attitude शो हो रहा हो ठीक है किसी भी पर्सन का, so उसको हम ठीक है modal auxiliary verbs कहते हैं. For example, I will help you by all means. ठीक है, so you must take care of your health. You ought to have completed this work latest by yesterday. How dare he argued with the chief executive officer. Okay, we must complete the construction work within 15 days. They have not published the results in time. So will, must, ought, dare, must, have, these are all modal auxiliary verbs. Okay, so ये different attitude of mind show कर रहे हैं, so that's why इसको हम modal auxiliary verb कहेंगे. Next है transitive and intransitive verbs. So transitive verbs is a verb which passes over the action of a noun, subject in the sentence to an object in the same sentence. For example, he eats an apple. Okay, so ऐसे verbs जिनमें हम
ओवर द एक्शन ऑफ द नाउन सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर. लाइक ही ईट्स एन एप्पल, ही इज़ अ सब्जेक्ट, ईट्स इज़ अ वर्ब एंड एप्पल इज़ अ object. Okay, so the verb eats passes over the action of he to the object apple. Okay, so यहाँ पर देखें कि he वो person है, हमने यहाँ पर noun को नहीं यूज़ किया, हमने pronoun को यूज़ किया he को. eats क्या है, उसका action है, action of a noun है, और apple क्या है, object है. ठीक है. Some more example of transitive verbs over here. I read a book. The teacher teaches history. The book throw a ball. ठीक है. Intransitive verbs कौन से होते हैं? Intransitive verbs is a verb which doesn't pass over the action of the noun to an object. However, the verb expresses an action or a state of being. Okay. So number 1, the intercity express arrived late. ठीक है, यहाँ पर कोई भी ओवर द एक्शन नहीं हुआ है, डन, लेकिन हमने ट्रांजिटिव में रीड किया कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, ओवर द एक्शन ऑफ द नाउन. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है. ठीक है. सेकेंड वन इज द चाइल्ड वीव्स. थर्ड वन द डॉग बार्क्स लाउडली. ठीक है. माई फादर स्लीप्स. फिफ्थ वन, though we had planned to stay for a fortnight in our village, we leave today. Okay, I hope ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे. So take care. अल्लाह हाफिज़.